मैंने स्ट्रीम शुरू कर दिया। स्लाइड शुरू करें। ठीक है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। ज़रूर। नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश ग्लोबल लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ है भीम और आज की इस चर्चा में हम आपको बताने वाले हैं हमारे माई बिल बुक ऐप के नए अपडेट्स के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहें। बस कुछ देर में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ और लोग हमारे साथ, कुछ हमारे और व्यूअर्स और यूजर्स हमारे साथ जुड़ जाएँ। लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पे सोमनाथ मान जी सेज हाय। हाय सोमनाथ जी। हाय हाय मोहम्मद सकलैन। हाय कृष्ण कुमार। हाय सोवे। हाय हरेंद्र। हाय दिलजीत जी। जो लोग भी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम आप सबको बताना चाहेंगे कि आज हम आपको बताने वाले हैं माई बिल बुक ऐप में नए अपडेट्स के बारे में। और अगर आप अभी यहाँ पर हैं तो हम आप सबसे दरखास्त करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स भेजते हैं, ट्यूटोरियल वीडियोस भेजते हैं और लाइव सेशंस करते हैं। तो आपको इन हमारे सारे फ्यूचर सेशंस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमित पलीवाल कहते हैं हाय। हाय अमित जी। हाय संजीव ब्लॉग्स। हाय जेपी सॉल्यूशंस। आप अपने सारे सवाल डाल सकते हैं। यू पीपल कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस वंस वी आर डन गिविंग अपडेट्स। विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस वन बाय वन। हाय अजय जी। जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम सबको बताना चाहिए कि हम आपको नए अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं और आपके सवाल लेने वाले हैं। और आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लाइव अपडेट्स, ट्यूटोरियल वीडियोस और सबके बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। Legend Lovers says, hi, I'm a new subscriber. Thank you for subscribing us. So जी हम सवाल लेंगे, आप प्लीज़ पूछते रहें। एक बार हम आपको अपडेट्स दे दें, उसके बाद हम सारे सवाल एक के बाद एक करके लेंगे। राजीव जी कहते हैं बहुत अच्छा सर्विस है आपका। शुक्रिया सर। हाय प्रज्वल। हाय योगेश। हाय विनय। आप जिनके भी सवाल आ रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे अपडेट्स एक बार खत्म हो जाए, फिर हम आप सबके सवाल के जवाब देंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। तो जब तक हमारे साथ हैं, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। We have
स्टार्ट। ज़रूर। तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे माई बिल बुक ऐप में जो भी नए अपडेट्स आए हैं पिछले 1 महीने में उन सबको। तो क्या होता है, हम हर बार यूट्यूब लाइव पे या फेसबुक लाइव पे हमारे दर्शकों को बताते हैं कि कौन से नए अपडेट्स आए। बट लेट्स से आपसे कभी मिस हो जाता है कोई लाइव, तो उस केस में आपको कैसे पता चले कि अपडेट्स कौन से आए हैं या क्या नई चीज़ें आई है माई बिल बुक ऐप में। तो इस कारण से हमने आज ये लाइव सेशन इस टॉपिक पर रखा है कि जो भी हमारे लास्ट मंथ में मेजर अपडेट्स हैं हम उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे फ़ोन की, तो मैं आपको एक-एक करके सारे दिखा देता हूँ। इनमें सबसे पहला, द foremost इज़ केरला फ्लड सेस। तो केरला फ्लड सेस इज़ अ टाइप ऑफ सेस दैट इज़ levied only in Kerala, and this is something that every GST registered business in Kerala needs. So we've been speaking to a lot of customers in the past who often told us that they were unable to make proper bills because of the Kerala floods as not being available in My BillBook. So we have added this functionality. Uh, the way you can switch it on is you have to go to more, and inside more you go to company and GST settings. Here you have to enter your GST IN number which should belong to the state of Kerala. So I'm adding 32 here, और फिर I'll just add a dummy number. आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख कर आ रहा है ऐड केरला फ्लड सेस। अगर आप इसे टिक्ड ही रहे रखने देंगे तो उससे क्या होगा, आपके सारे इन्वॉइसेस में एक एक्स्ट्रा केरला फ्लड सेस ऐड हो जाएगा जो भी उस आइटम का एच है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो फिर वो नहीं लेवी होगा। तो इससे ऑल ऑफ आर कस्टमर्स, ऑल ऑफ आर बिजनेस ओनर्स हु आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला हु वांट टू ऐड केरला फ्लड सेस कैन डू सो। Another interesting thing that we have launched in the last month is, जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स थे, जो भी हमारे कस्टमर्स थे जो सिंपल प्रोडक्ट्स में डील करते थे, जैसे सिगरेट्स हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो, तो क्या होता है उनके प्रोडक्ट्स पे सेस लगता है और वो उस सेस को उनके इन्वॉइस पे दिखाना चाहते थे कि इतना प्रतिशत सेस लगा है। तो हम इसके पहले क्या करते थे, हम सेस और जीएसटी को जोड़ देते थे। तो हम 28% टैक्स प्लस 12% सेस को एक साथ 40% जीएसटी लिख देते थे। तो हमने उसे फिक्स कर लिया। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा कि जो भी आप सेस रेट चूज़ करते हैं वो सेपरेटली आपके इन्वॉइस में दिखेगा। अगर आपकी इन्वॉइस फॉर्मेट में कॉलम्स होते हैं देन यू विल सी अ सेपरेट कॉलम फॉर सेस। तो दैट्स द सेकंड इंटरेस्टिंग अपडेट दैट वी लॉन्च इन द लास्ट मंथ। द थर्ड इज़ समथिंग जो हमें लगता है काफ़ी हमारे व्यूअर्स को, काफ़ी हमारे कस्टमर्स को ये पेन पॉइंट होता होगा कि व्हेन दे मेक बिल, जब वो बिल बनाते हैं तो उनकी खुद की भाषा में बनाते हैं। जैसे जो हमारे गुजरात के ट्रेडर्स होते हैं वो गुजराती में बिल बनाते हैं, उनकी पूरे इनवॉइस गुजराती में लिखी होती है, उनके सारे आइटम के नाम, उनके सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स, बाकी डिटेल्स उस इनवॉइस पे सब गुजराती में लिखे होते हैं। तो हमने सोचा अगर वो माई बिल बुक पे बिलिंग करेंगे तो उनको सेम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, सेम ईज़ ऑफ यूज़ मिलना चाहिए जो उनको पेपर पे आता है। सिमिलरली वी नोटिस द सेम ट्रेंड इन आर बिजनेस ओनर्स, इन आर कस्टमर्स फ्रॉम तमिलनाडु, एंड फॉर दैट रीज़न वी इंट्रोड्यूस 2 न्यू लैंग्वेजेस इन माई बिल बुक। वन इज़ गुजराती एंड द अदर इज़ तमिल। सो जब भी आप ऐप खोलेंगे, whenever you open the app you will see these two options, and by selecting either of these options you can use the entire app in your mother tongue. तो दैट्स द थर्ड अपडेट दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। तो फोर्थ इज़ कि हमें काफ़ी बिजनेस ओनर्स बताते हैं कि उनका जो फ़ोन नंबर है जिससे वो माई बिल बुक पे रजिस्टर्ड है, इट्स नॉट द सेम नंबर दैट दे वांट टू शो ऑन द इनवॉइस। जैसे कुछ बिजनेस ओनर्स बताते हैं कि अगर वो उनका पर्सनल फ़ोन नंबर डाल देंगे इनवॉइस पे तो उनको लेट्स से रात को फ़ोन आ जाएंगे या वीकेंड फ़ोन आ जाएंगे, या लेट्स से उनका एक बिज़नेस का सेपरेट नंबर है और वो चाहते हैं उसी नंबर पे सारे कॉल्स हैं। तो उस केस में हम, क्योंकि माई बिल बुक पे जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर था वही इनवॉइस पे दिखाते थे, तो फिर कस्टमर्स को, बिजनेस ओनर्स को दिक्कत होती थी। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने एक ऑप्शन ऐड किया कि आप उसे छुपा सकते हैं या फिर एक दूसरा नंबर दिखा सकते हैं। तो आप मोर में जाइए, मोर में कंपनी एंड जीएसटी सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा शो फ़ोन नंबर ऑन इनवॉइस। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा ना तो योर फ़ोन नंबर विल नॉट बी शोन ऑन द इनवॉइस। अगर मैं इसे ऑन कर लूँ देन आई कैन चूज़ विच फ़ोन नंबर आई वांट टू शो ऑन द इनवॉइस। तो करंटली वो मेरा डिफ़ॉल्ट रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर बता रहा है, बट इफ़ आई वांट आई कैन ऐड लाइक माई बिजनेस फ़ोन नंबर या मेरे पार्टनर का फ़ोन नंबर, एंड दिस विल बी शोन ऑन माई इनवॉइस ओनली। इससे मेरी लॉगिन इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो दिस इज समथिंग दैट वी सीन अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आस्क फॉर। तो दैट्स द फोर्थ अपडेट। आई थिंक अविनाश, नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। जी, ब्लॉग्स का पहला सवाल है और वो कहते हैं सर बिलिंग करते समय कभी-कभी ऑफलाइन क्यों दिखाता है? राइट। तो सर क्या होता है कि हमारा जो माई बिल बुक ऐप है ना, वो ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। तो जब भी वो हमारे सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाता तो आपको बताता है कि देखो मैं ऑफलाइन हूँ, तो जो भी आप इन्वॉइस बना रहे हो वो बन रही है, बट वो अभी सिर्फ आपके फ़ोन में स्टोर हो रही है, वो हमारे सर्वर के साथ सिंक नहीं हो रही। तो लेट्स से आप डेस्कटॉप ऐप भी यूज़ करते हैं
या आप मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र से मेरा मतलब है आप मैनेज योर स्टाफ का फीचर यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास मल्टीपल यूज़र्स होते हैं जो आपकी सेम अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, लेट्स से आपने एक ऑफलाइन इन्वॉइस बना रखी है तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स से आप शॉप में हो, आपने एक ऑफलाइन इन्वॉइस बनाई और आपका डिलीवरी बॉय है जो स्ट्रीट पे है, तो उसे वो इन्वॉइस दिखेगी नहीं। इसलिए हम क्लियरली बताते हैं कि देखिए अभी इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत की वजह से आपका इन्वॉइस ऑफलाइन है। बट मैं आपको ये बता दूँ कि आपका इन्वॉइस बन चुका है और वो आपके फ़ोन में सेव्ड है। द मोमेंट आपके पास इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा आपके फ़ोन पे, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा और आपके मल्टीपल डिवाइसेस पे, कंप्यूटर पे और जो भी आपके बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको पहुँच जाएगा। JP Solution says, I want to add bulk items in a purchase. अच्छा, तो सर currently we have the option to add bulk items to My BillBook app. So we've seen a lot of business owners who tell us that they want to switch from paper billing, but the biggest bottleneck for them is that they have many SKUs. Like let's say they have 100 or 150 SKUs. So in that case, manually entering all of these in My BillBook would be very difficult. So what we allow for such businesses, for such customers is they can either import it from our items library. Like let's say you're in the FMCG space, a lot of these items are very common, a lot of their prices are common. So you can directly import these items from our item library into your My BillBook app. You could also import from an existing app that you may be using. Like let's say you're a Tally user or a Vyapar user. Sorry. So in that case, you can just import all of your items from your existing app to My BillBook. We also allow images of your purchase list. So what I mean by that is, let's say you buy a set of 10 items from a supplier, and now you want those 10 items, all of that information to be fed into My BillBook. So you can just send us a photo or a PDF of that document, and we can add it in My BillBook for you. What this does is this adds all of the items in bulk to the My BillBook app, and then you can add them very quickly to your purchase invoice or sales invoice, whatever you're making. So I would definitely recommend, sir, that you try that. You import your items, and once you've imported your items into My BillBook, it's very easy to add them to an invoice or a purchase. It will hardly take any time. Souvik Dhara says, we need more invoice style. Um, Savik I understand that currently we have around 7 to 8 invoice formats, and in that we also add some specification. Like let's say if you want an A4 invoice or an A5 invoice, or let's say if you want a thermal printer invoice. So right now we have those varieties. Going forward, we'll definitely be introducing more varieties. One thing that I would definitely recommend that you try out is we have a color bar right under the name of the invoice. I'll just show you what it looks like. I'll go to invoice settings, invoice format. Yeah. So you will see this color bar here. So what we noticed was a lot of customers want a change in the format, and also they want to change in the color. So what that does is you can take an ordinary looking format, you can take a simple looking format. Let's just take the format called simple, right? Now this is a fairly simple looking format, but if you add the right colors, like let's say I add orange because the logo in this invoice is orange, so it matches with the overall theme of the invoice, your company's logo. So that is something that I would definitely recommend that you try out. That you add a logo that your company uses, and then you change the color and see if you like any of the themes now. So that essentially gives you like the 7 or 8 theme options that we have plus the 8 color options that we have. Along with this, let me tell you that we're also working on new themes. So going forward, we'll be definitely introducing some more themes. दिलजीत जी का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कहते हैं कि सर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो मुझे उससे मैनेज करना है, तो आप बता सकते हैं कि माई बिल बुक ऐप से मैं स्टूडेंट्स के एडमिशन कैसे मैनेज कर सकता हूँ। राइट। तो सर अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आप जो सर्विस दे रहे हैं वो है ट्यूशन, राइट? और आप उस पर ट्यूशन फ़ीस चार्ज करते होंगे। तो आप ये कर सकते हैं, मैं आपको फट से करके दिखाता हूँ कि आप एक आइटम बना लीजिए। तो जो माई वेबबुक ऐप है इसे यूज़ करने के लिए मतलब इसे यूज़ करने इसका यूज़ दोनों टाइप के बिजनेस करते हैं। जो जो एफएमसीजी के रिटेलर्स हैं वो भी करते हैं, और जो आप जैसे बिजनेस जो सर्विसेज देते हैं, तो सर्विसेज के भी बिजनेस हमारा ऐप यूज़ करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू आइटम करिए और आप लेट्स से 7th क्लास की ट्यूशन का एक आप आइटम बना लीजिए, ठीक है? और आप कोई तो प्राइस दे दीजिए इसकी ट्यूशन पे, ठीक है? बाकी आपको कोई डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो आप कोई एक्स्ट्रा रिमार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि लेट्स से
आपके 7th के ट्यूशन के भी 2-3 पार्ट्स हैं, और वो कौन से पार्ट में आता है, लाइक 4 घंटे वाली क्लास है या ये 2 घंटे वाली क्लास है, हफ्ते में 4 बार होती है, 2 बार होती है, वैसे टाइप की चीज़ें। और आप इसे सेव कर लीजिए यहाँ पे। और जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आप फिर आपके स्टूडेंट्स को जब भी इनवॉइस देंगे तो आप वो आइटम ऐड कर लीजिए जिसकी आपको, मतलब जो सर्विस आप दे रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 7th ट्यूशन का मैंने आइटम ऐड कर लिया है, और अगर मैं फिनिश फिल करता हूँ, राइट, तो आप देखेंगे यहाँ पे 7th की ट्यूशन का एक बिल बन गया। यहाँ पे आई मेरा कॉलम इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने एडिशनल फील्ड हटाई नहीं थी, तो क्योंकि आपके बिजनेस में वो काम की नहीं आएगी, तो आप इसे ज़रूर हटा दीजिए। आप एमआरपी भी यहाँ से हटा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कोई डिस्काउंट भी दे सकते हैं। जैसे आप जो होशियार बच्चे होते हैं जिनके लेट्स से 6th क्लास में बहुत अच्छे नंबर होते हैं, तो आप उनको 7th क्लास में डिस्काउंट दे देते हैं। तो अगर वैसी कोई चीज़ होगी तो आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी ऐड करेंगे। जैसे आप सर्विसेज बिजनेस में हो, राइट, तो हम सर्विसेज बिजनेस के लिए बहुत कस्टमाइज सी इन्वॉइस बनाएंगे जहाँ पे क्वांटिटी नहीं होगी, और जैसे आपकी करंटली पेपर में इन्वॉइस बनती है वैसी माई बिल बुक पे बनेगी। योगेश जहांगीर जी कहते हैं ऐड ऑप्शन टू सेंड एसएमएस व्हाइल क्रिएटिंग बिल। अच्छा, तो सर currently we do have the option to send an SMS, but like you rightly pointed out, it's not an option that's presented at the time of creating bill. So to all of our other viewers, I'll just give a quick demo of how you can switch on or switch off if you want to send automatic SMSs to your customers. So you have to go to app settings, and app settings के अंदर there's an option that says automatic SMS. तो if I switch this on, what's going to happen is जब भी मैं बिल बनाता हूँ किसी पार्टी के साथ, उस पार्टी का अगर फ़ोन नंबर मेरे ऐप में होगा, माई बिल बुक ऐप में, तो उनको एसएमएस चले जाएगा कि दिस वाज द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन दैट यू मेड, इतना आपका ओवरऑल आउटस्टैंडिंग है, और अगर आप इस इनवॉइस का पीडीएफ देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करिए। तो करंटली वी हैव दिस ऑप्शन दैट आप सारे कस्टमर्स के लिए एक सेटिंग ऑन कर सकते हैं जिससे सबको ऑटोमेटिक एसएमएस चले जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड विल डेफिनेटली कंसिडर एन ऑप्शन जहाँ पे हम आपको कस्टमर लेवल पे चूज़ करने दें या इनवॉइस के टाइम पे चूज़ करने दें कि आपको एसएमएस भेजना है या नहीं। विनय तिवारी कहते हैं नीड मैन पावर स्टॉक इन्वेंटरी ऑप्शंस। अच्छा, so sir, what I understand from this is that you have some workers who work with you, and you want to sort of keep track of how many hours they've worked with you. If this is what you mean by your question, sir, I'll discuss how I think you can use my bill book to solve this business need. But if that's not what you're looking for, do tell us in the comments. Um, so what you can do, sir, is you can create an item and you can just name it. So let's say you have 3 or 4 different workers with you. You can just add their name here. Like let's say I add something like ठीक है, I add something like Rohan. So that's, let's say, the name of my worker, and I'll put the price that he charges for, let's say, 1 days of work. So let's say I write 5,000 here. And now what you can do is because you haven't set any stock value for Rohan, how much ever Rohan works for you, whenever you create an invoice, you can add the quantity in terms of days. So I'll just check if there's an option for changing the unit to days. Hmm. Right, we do have mandates, great. So what you can do is every time you make a bill, you add the number of man days that Rohan has worked for you, and at the end of, let's say, a week, you'll know कि you started with 0 man days and now you're at -12 man days, or let's say -4 man days. तो उससे you'll know how many hours that worker has worked for you. तो उससे आप sort of मैन पावर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। नीतीश जी कहते हैं आई नीड कस्टमाइजेशन इन क्रिएट स्टाफ सेक्शन। Right. So I'll just quickly show our create staff section to all of our viewers. So what we've learned from all of our interaction with business owners, customers, is that uh, they often don't do all of the work themselves. They delegate the work, right? तो आपका सेल्समैन जाता है और वो शॉप पर बात करके आता है, वो वहाँ पे इनवॉइस बनाता है, या आपका डिलीवरी बॉय होता है जो जाकर डिलीवरी करके आता है, कैश कलेक्ट करता है। और बिजनेस ओनर्स ऑफन स्टोर में होते हैं एंड दे वांट टू हैव अ 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है, इनवॉइस बनी या नहीं बनी, डिलीवरी हुई या नहीं हुई, पेमेंट मिली या नहीं मिली। तो we realize that this is a very important piece of information for business owners, and for that we've created a manager staff option. So
what you can do with manage your staff is you can share access of your My BillBook app with all of your staff. But we understand that like your salesman should not need to know purchase price या किसी item का, या your stock manager does not need to know कि आप कौन सी पार्टी को कितना आउटस्टैंडिंग हो करते हैं. तो all of these things we've sort of written down in rules. So I'll show you how it works. Let's say I go to the manage staff option. You can see all of the different staff options that you have. There's also video here just in case आपको पूरा flow समझना होगा. If I try to add a new staff member, I'll have to give the staff member's name and phone number. Also I'll have to choose what the role is. तो लेट्स से आई चूज़ द सेल्समैन रोल. ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कि सेल्समैन कर क्या क्या सकता है, वॉट ऑल थिंग्स द सेल्समैन इज अलाउड टू डू. तो यू विल सी इट सेज ही कैन क्रिएट सेल्स इनवॉइस, ही कैन व्यू आइटम डिटेल्स. So these are all things he can do. Let's say you want like a more comprehensive, like a more detailed explanation of what all the salesman can do and cannot do. You click here to view all permissions. तो उससे you will be able to see the entire spectrum of permissions that the staff member has. तो जैसे हमें सवाल आया कि उनको कस्टमाइजेशन ऐड करना है क्रिएट स्टाफ सेक्शन में नीतीश कुमार सर को. तो व्हाट ही कैन डू इज़ यू कैन रीच आउट टू अस एंड टेल अस विच स्पेसिफिक थिंग यू नीड कस्टमाइजेशन इन. जैसे लेट्स से आपको जो सेल्समैन उसको इनवॉइस डिलीट करने का ऑप्शन देना है, तो आप हमें बताइए सर, हम डिस्कस करेंगे और हम उसे आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी इसकी ज़रूर हम कोशिश करेंगे. Currently we have a fixed set of permissions, but going forward we'll definitely take suggestions from our customers. प्रशांत जी कहते हैं प्रश्न कब पूछना है. प्रशांत जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछिए, हम एक एक करके सबके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं. स्नो वाइट गोट्स प्राइवेट लिमिटेड नासिक से says hello, your product is simply great, please tell me how to rearrange our product list in online store. Right, okay. So great sir that you think our product is helping your business. I'll just quickly show how our viewers can access the online store. आप items पे जाइए, go to items and at the top right there's an option that says settings. Just go to settings. Wait, actually there's a better way. Just go to more and from more you'll see an option that says online store. So basically this is like an online version of your store. So all of your customers can make quotations on your store, and then you will find those quotations in your My BillBook app, and then you can choose if you want to make that sale or not. You will also be able to see what the status of your inventory is and if you can even make that sale or not. So I'll just quickly create my store now. So it's like a one-step process. All I have to do is just press that button. All of my items that exist in my inventory get added to the store. अगर मैं चाहूँ, if I want, I can sort of hide some items from the online store. Right. So right now I'll just go to view store. The question is, how do we rearrange our product list? So right now on online store, the order of items is the order in which you've created them. So which is why I just created 7 tuition at the start of this live, and it's the second last. I just created Rohan and like the last question, and it's the last one. So currently this sorting is based on which was the last created item. But we understand that जो आपके customers होंगे, they won't scroll much. What they'll do is they'll just try to find their category. So we encourage all of our customers, all of our business owners to create categories such that each category has like 5 or 6 items only. So that gives their customer a very quick way to get to the item that they're looking for. Like let's say if I'm looking for bakery items, any other kind of item is just noise for me. So I would definitely recommend sir that you create categories, and with those categories you let your customers sort of look for the item they're looking for. प्रथमेश जी का कहना है, प्रथमेश यादव says best up. Thank you प्रथमेश जी. Souvik Dhara is our premium customer. He says he's not very happy with the invoice type. तो शोभिक जी अभी जैसा दीप जी आपको बता रहे थे invoice type के बारे में, so please get in touch with us. हम आपके requirements थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे कि आपके क्या यूज केस है, क्या रिक्वायरमेंट है. तो do get in touch with us on our customer support number, which is 74004740, and we want to help you as soon as possible. Prathamesh says good service team. Thank you Prathamesh ji. Sayan Shah says good service. Thank you Sayan ji. Ketan Chauhan says very good improvements on application. Keep up the good work. Thank you Ketan ji. SSE says GST involves number and without GST invoices no. Deep ji, can you get it? Right. तो I think I understand this question. तो ये व्यूअर हमें क्या बता रहे हैं कि कुछ बिजनेसेस में क्या होता है, वो एक ही ऐप में जीएसटी वाले इन्वॉइसेस भी रख रहे हैं
और नॉन जीएसटी वाली भी रख रहे हैं। तो होता क्या है, जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको सारी इन्वॉइसेस सीक्वेंशली नंबर करिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी। तो लेट्स से अगर मैं बीच में कोई नॉन जीएसटी इन्वॉइस बनाता हूँ और मैंने इसके पहले 3 जीएसटी इन्वॉइसेस बना रखी होंगी, तो मेरी अगली जीएसटी इन्वॉइस नंबर 5 बन जाएगी, जबकि वो जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंग नंबर 4 होनी चाहिए। तो ये जो एसएसई सर कह रहे हैं हमें, वो एसेंशियली ये बता रहे हैं कि ही नीड्स टू सेपरेट invoice sequences such that he can differentiate between GST and non-GST invoices. So sir, this is definitely something that we're working on. We've seen a lot of requests from business owners जो बताते हैं कि उनको उनकी बिलिंग भी सेपरेट करनी है, जैसे वो रिपोर्ट देख पाए जीएसटी वाली और वो नॉन जीएसटी वाली सेपरेट देख पाए, या वो अपनी सारी इन्वॉइसेस देख पाए, जीएसटी वाली सेपरेट और नॉन जीएसटी वाली सेपरेट. So that's definitely something that we're working on. And going ahead in the coming weeks or in the coming months, you will definitely see a feature that allows you to separate your entire GST billing and non-GST billing. So that will include like having the right sequence number. That will include showing the right data in the reports. That will include having a filter for when you want to hide the non-GST reports, non-GST invoices. So do stay tuned with us. We'll definitely bring something that solves the problem. Kavita Vinod Kumar is a premium user, and so the question is how to get category-wise sales report in BillBook. Right. So ma'am, currently we don't have the option of looking at category-wise reports. Uh, what I've seen a lot of business owners do is वो items में tags add कर लेते हैं. तो let's say I'm looking for all items जो Tiffany के है या जो Britannia के हैं. So I would just write Tiffany here and see all of the items. So this is a hack that works for, let's say you want to see what the current stock is, you want to see what the sales price is of a particular item. For reports however, I'll just quickly show you how we access reports. So it's currently called statement, and if I go to sales report, yeah, we have an item sales report here which tells you कि कौन सा item कितनी quantity में बिका था in this particular duration. So right now I've set it to this week. Currently we don't have an option to like select which category of items you want to see in the report, but going forward we'll definitely be introducing something like that. Let's say you want to select the specific item, so you can do that. If you go to party report by item, you can choose the specific item that you want to see these reports for. That is definitely something that you can try. Going forward we'll be adding reports where you can filter by category. रंजीत पाटिल जी कहते हैं मराठी लैंग्वेज ऐड करो. तो सर बहुत खुशी हो रही है सर मुझे आपको बताने में कि हम गोइंग फॉरवर्ड ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐड करेंगे. करंटली हमारे पास गुजराती है, हमारे पास तमिल है, और हमारा यही प्लान है कि जो भी हमारे कस्टमर्स बिजनेस ओनर्स हैं वो जिस भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं हम वो लैंग्वेज ऐड कर देंगे. तो हमने देखा हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड हम डेफिनेटली मराठी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे. विनित रुवाली जी कहते हैं मल्टीपर्पज कंप्यूटर में ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ मोबाइल में होता है. अच्छा. सर अगर आप हमें बता सकें कि आपका मल्टीपर्पज़ से मतलब क्या है, वील बी एबल टू हेल्प यू. इफ़ नीडेड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू आवर कस्टमर सपोर्ट सर. आप वहाँ पे कॉल या चैट कर सकते हैं, और हम आपका प्रॉब्लम समझने में और आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करेंगे. एम सतीश कुमार कहते हैं स्टिल अदर लैंग्वेज डजंट प्रिंट. राइट. सर द वे वी इंट्रोड्यूस्ड Gujarati language, or let's say Tamil languages, that at this point the app will look like it's in Gujarati or it's in Tamil or it's in Hindi. Any items that you create, any party names that you write in your language, Gujarati, Tamil, for that matter, any language, will show up in that language in the invoice PDF. But let's say other things like tax invoice or item name. So these are things that are still in English. Um, we haven't heard from business owners often about them needing those things to be in their mother tongue also. So if that is your requirement, sir, please reach out to us. We'll be happy to understand how your invoices look, and we'll be happy to like tailor the app based on those requirements. Ketan John says, is there any provision of customer name in customer master? राइट. तो केतन जी आप क्या कर सकते हैं कि वेन एवर यू एड अ पार्टी, you can just add the party's name,
and that way you'll always have the customer's name. If I understand correctly, that is what you're asking about. If this is not your question, sir, do tell us in the comments or do reach out to us. Sure. Uh, Sharan says, please include attendance using QR code for employee. Acha. So, sir, it's great that you want to use My BillBook for also keeping track of attendance. Right now, sir, we don't have that feature. What we do allow is we've seen a lot of business owners, they just add all of the salaries as an expense at the end of the month. So we allow for an expense voucher that you can create, and with that you can sort of choose what sort of category this expense voucher belongs to. You can also create your own categories, and we've added an employee salaries and advances category here. So you can just choose this category, and whatever salary or whatever amount you're giving out as salary, you can enter it here. At this moment in time, there's only a cumulative salary expense option. We don't have an attendance option, but we'll definitely think about this. प्रशांत वाडेकर जी कहते हैं, पेमेंट रिमाइंडर भेजते वक्त क्लाइंट का नंबर सेव करना पड़ता है, उसके अलावा क्या डायरेक्ट आपके ऐप से भेज सकते हैं? तो सर, अगर हमें उनको एसएमएस भेजना होगा या व्हाट्सएप भेजना होगा, तो हमें उनका फ़ोन नंबर तो चाहिए ही होगा। तो आप इधर ये कर सकते हैं कि लेट्स से आपके पास कॉन्टैक्ट बुक में उस पार्टी का कॉन्टैक्ट है, तो आप डायरेक्टली जब पार्टी बनाएंगे, तो आप कॉन्टैक्ट बुक से ही ले लीजिए उनको। जब आप इनवॉइस बना रहे राइट, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पवन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी को भी चूज़ कर लेता हूँ ना, तो इस नाम से कॉन्टैक्ट बन जाएगा और ये फ़ोन नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आपके पास कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन बुक में है, तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे पार्टी में ऐड कर सकते हैं और फिर आप एसएमएस सेंड कर पाएंगे। Science says how to shoot delivery date to customer. अच्छा, तो we have a field that's called the additional invoice field. I'll just quickly show you how it works. um, I go to bill invoice, okay, and I go to right. So I have some additional fields already from my last live. I just change them to add delivery. So here in the options, you will see an option that says add fields to invoice. So that basically means कि let's say you want to add something that isn't already existing there in the invoice, but this is important information that you need to convey to your customers. So I'll just create an existing field here called delivery date, right? So you'll see that this delivery date option, I'll just remove this and right. So you will see that the delivery date option now shows up in your invoice form. So let's say I select 31st December as my delivery date, okay, and I make an invoice to, let's say, this party called Deep. I'll add some items to it. Now what's going to happen is in the invoice, yeah, in the invoice here you will see this field called delivery date that we created, and whatever value for delivery date you've entered. So like this, any specific information specific to your business that doesn't already exist in the invoice, you can just add it using an additional field. Ankit Media says, hi, please do give option to upload customer field data and image link in bulk item upload in your future updates. एक मिनट. Hmm, Ankit Kedia says, please do give option to upload customer field data, custom field data and image link. right. So currently, the way you can share images is you just go to the image, you just go to the item, and there's an option that says share. So if you press share here, I'll just show you how it gets shared. Oh, okay, this item doesn't have any images. So the way it works is if you press on share, it opens your WhatsApp and you can share the images that you have added for the item over WhatsApp. Currently we don't have a feature to like add specific item information or add specific fields, like let's say I want to show that there are only 5 items in stock, so please hurry, please make a sale quickly. Or let's say I want to say something like I have a sale and this is going to be 40% off, so buy it now. So that sort of information we haven't incorporated in this feature as of now. What you can do is you can definitely write a text message after you've shared the images,
But going forward, we'll also be adding functionality wherein you can add specific information about the item that already exists in the app, or maybe you want to add it yourself and then share it as an image. Amit Batliwala says, please add GST 3B in reports for fast filing return. Right, right. So sir, we're definitely working on some new reports, and as soon as they're ready, we'll launch them. So right now we have releases that come out every week. So in the live itself, if it's coming out, I'll let you know, and that way you can access all of your business reports on my BillBook. My Studio Bhagat says, he asks to add hour in quantity in units basically. Acha. So I'll just quickly run through all of the quantities we have right now. If we look at all of the service type quantities, hmm, we have hours, sir. So you'll find it under measuring units. And if let's say you have a business where let's say you rent bikes, or you have man hours or man or any sort of worker metric, so in that case you can use this unit. तो मोहित जी का ही दीप जी क्या आप ये हिंदी में एक बार फिर से बता सकते हो, क्योंकि उनका सवाल है कि उनका जेसीबी का काम चलता है, अच्छा, आवर्स के हिसाब से बिल करते हैं, तो अच्छा। इसमें उनको दिक्कत आती है। राइट, राइट। ज़रूर, तो मैं आपको फट से एक आइटम बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे जो आपका जेसीबी रेंटल का सर्विस है, उसे आप माई बिल बुक से चला सकते हैं। तो मैं एक आइटम बनाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा जो भी आपके व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस है। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ जेसीबी, अभी के लिए मैंने सिर्फ जेसीबी रेंटल लिख दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेल्स प्राइस सेट कर लूँगा। लेट्स से आपकी प्राइस है कि आप 4500 चार्ज करते हैं पर आवर, ठीक है। अ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक इनवॉइस बनाऊँगा जहाँ पे मैं क्वांटिटी सेट कर दूँगा जितने आवर्स के लिए मैं अपना जेसीबी रेंट कर रहा हूँ। तो मैं फट से इनवॉइस बनाता हूँ दीप नाम की पार्टी के साथ, ठीक है। और मैं आइटम ऐड कर दूँगा जी, राइट, जेसीबी रेंटल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्वांटिटी 1 सेट कर दी। अगर आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं कि लेट्स से आपने 4 आवर्स के लिए किसी को रेंट कर दिया, और मैंने यहाँ पे प्राइस भी सेट कर दी कि पर आवर का रेट कितना है, और आप उसे फिनिश कर दीजिए। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने आई एम ई आई का एक एक्स्ट्रा फील्ड आइटम ऐड कर रखा है, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है। अगर आप वो नहीं ऐड करेंगे तो आपके इसमें इनवॉइस में सिर्फ आइटम्स होंगी, क्वांटिटी होगी, और अगर आप एम आर पी ऑफ कर देंगे तो वो भी हट जाएगा, पर रेट और अमाउंट होगा। तो उससे क्या होगा, आप एक इनवॉइस बना सकते हैं जहाँ पे आप बता रहे हैं आपने कौन सी चीज़ रेंट पे दी है, आपने कितने टाइम के लिए रेंट पे दी है, और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट कितना है। तो सर इससे आपका प्रॉपर जेसीबी रेंटल का इनवॉइस बन सकता है। Vishal Alert says, can we print barcodes from inventory and create and print barcodes while adding purchase bills? Right. So answering your first question, sir, you can definitely create barcodes and you can print those. I'll show you how it works. Uh, let's say I have this item. ठीक है, Britannia cupcake. I try to edit this item. What I have to do is I have to go to stock. Okay, this item already has a barcode. Let's create a new one. Okay, so I'm creating a new item. Let me just call it Kit Kat. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to go to stock, and here it says generate barcode. So I opened the create item form and I went to stock. When I generate barcode, it gives me a unique barcode. It also allows me to print it or download it. So let's say if I have a printer connected to my phone, I can just directly print it, or let's say I can download it and then get it printed. What we've seen business owners do is they often print these barcodes, stick these barcodes, and at the time of billing, they essentially use their phone as a barcode gun, and every time they just point the phone at the barcode and the item gets added automatically. I'll show you how that works. Whenever you're creating a bill, you've added a party, okay. Whenever you add items, there's an option here at the right top. So it's right next to the search. So if I select this, it essentially opens my barcode scanner. So right now I don't have a barcode that I've added to the app, but whenever you add a barcode and you try to scan it, the moment it gets scanned, it shows up here automatically. So it's like just a normal counter. You just scan it with your phone. That's your barcode gun. The items get added, and you press finish bill and you create your bill. The idea is that you don't have to spend extra money in like buying the barcode gun or like buying the monitor. You can just do it all from your phone. Growth Engineering Company says, they need
delivery challan and update. They have an engineering unit, and that's their need basically. Right, right. So, sir, very happy to tell you that we are working on it right now as we speak. Our engineers and our product managers are working on it, and in the coming weeks, we should definitely have an update where we release delivery challan to you. To come to our lives, where we'll definitely give a demo of delivery challan and let you know at what exact date you'll be able to download the new update. Anirudh Kamar Khairnar has a question in regards to safety. Okay. He says, uh, how is our data safe and private with you? And how can I export all the data to make a local backup in form of Excel? Right, right. So, sir, let me tell you that at My BillBook, uh, our primary motive is that Indian businesses should grow, and we understand that trust is a very big factor here. So we try to do everything humanly possible so that our customers know and understand how we keep their data. So I'll tell you what essentially happens. We have two stores of data. One is in the server where we keep the data. The other is on your phone. So let's say whenever you're making any offline invoices, that data is being stored on your phone. And let's say your invoices get synced, that gets synced on our server. The servers that we use are the same servers that like important organizations where data security is important, like banks often use. So if you're using a company that uses the same servers, so if there's any worry about data privacy, so you shouldn't be worried at all. We're using the state of the art. Also, you will see that at the beginning we also have some information about the trust certificates that we have. Right. So we have an ISO certification. So that basically goes on to say that we have taken the required steps to ensure that whenever a customer, a business owner makes any data entry on My BillBook, only he can see that data. Nobody else can see who made that entry, what the entry was for, how many items were in that invoice. None of that data anybody else can see. Your data is safe only with you. So let me tell you, sir, that is one of our primary priorities, and we'll make sure that whatever we can do, we keep your data safe. Science says how to show first added items in first position to customer. Okay. So this is actually something that we've worked on in the past, and if you are unable to select the first added item in at the top of your invoice, sir, please let us know. So I'll just quickly show you. If let's say uh, I make a bill to this party, and I'll just quickly tell you what the order is. Let's say I add a banana Nestle first, then I add an iPhone 8 Plus, and then I add, let's say, a JCB rental. So you will see that the order in which I added items is the same order in which they got added. Banana Nestle first, iPhone second, JCB rental third. Let's say आप क्या करते हैं आप I'll just quickly show another case. Let's say I add banana Nestle first, then I add an iPhone. Now I go and update the quantity of banana Nestle. Now what's going to happen is the iPhone goes to the top because whichever item was edited the last will come last. So it's based on the order in which you edit the item, not the order in which you add the item. So please keep that in mind. And whenever you add items or edit items in a particular order, they will show up in the invoice in that order itself. Okay. Souvik ji कहते हैं why QR UPI not working? Customer is not being able to pay through UPI. Acha. Sir, please reach out to us on our customer support channel. You can either call us or we can have this discussion over chat. We'd like to understand exactly what is breaking, what is not working. There are a couple of factors here. It could also be an issue on the payment gateway side, on the UPI player side, or it could be an issue on our side. So please reach out to us. We'll work on this as soon as we can. Okay. Ayansh says this there is formatting issue in the invoice. Bottom side separator line is not appearing. Acha. Sir, if you can tell us which invoice format this is happening for, we'll definitely fix this. Um, it will be hard for me to tell from here exactly which invoice that may be happening for. So please tell us either in the comments which invoice theme it is happening for, or if you can reach out to our support, even that works.
MB Jenny says, what is the use of reduce items? I'm confused about this. अच्छा, तो सर what we've seen a lot of business owners do is at the end of the day, or let's say at the end of the week, they go and they take a look at their inventory. They see ki how much stock is left, if any of their stock has perished, if let's say any of their stock has been sold but they didn't make an invoice for it, or let's say they didn't want to make an invoice for it. That is the objective of reduce items. So what we've seen a lot of business owners do is whenever they have this check in their physical inventory, they just quickly make that correction here. So let's say I have 100 units of Kit Kat, and let's say three of them become spoiled because of let's say some water leakage. So I can just quickly set that I have three items less now, so that my inventory is reflected correctly, and so that whenever I make an invoice, I know exactly how many items of these I have in my inventory. So Krishna Pondya asks for two feature. One is multi-company and the other one is multi-bank account. Right, right. So, sir, as of this moment, we don't have a multi-company feature. To all of our other viewers, I'll quickly let you know what Krishna sir means by multi-company. Like, let's say you have two businesses that you want to manage in one app, or let's say you have you have the same business, but you want to manage it as two separate firms, two separate entities. So that's essentially what um, Krishna sir here is asking for. Right now, we don't have this multi-company feature, but what we've seen a lot of customers do is because a lot of our phones today are dual SIM phones, so they make two accounts on My BillBook, and that way they can manage two companies on the same phone. Essentially, they have to log out every time they want to switch to the other company. Having said that, going forward, we're definitely going to work on introducing like a multi-company feature, so that business owners can sort of maintain like more than two companies. Along with this, bank account is definitely something that we've heard about a lot from our customers. They tell us that My BillBook right now is like the complete accounting solution for them. Only one thing that remains is they're not able to see how much cash they have in the bank, or they're not able to see how much cash they have at hand, and they're not able to reconcile that. So that's definitely something that we're working on as we speak, and we'll be introducing these features in the coming months. Evolution begin says Gujarati search item not working properly at bill generation. अच्छा, तो सर इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आपने गुजराती में एक आइटम का नाम लिखा है एंड देन यू आर ट्राइंग टू सर्च इन गुजराती. सर प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन सपोर्ट एंड we'll be able to help you out as to why this may not be happening. MB Jenny says, how to add MRP column in bill? Can we add this? Right, sir. Definitely, you can add MRP column in bill. We've seen a lot of retailers often add MRP because they want to show how much saving they've had. We've seen a lot of distributors add MRP so that they can show their retailer at what price they're going to have to sell. So I'll quickly just show how you can add MRP to your bill. So there are two ways. Either you just start creating a bill, and when you start to create a bill, you'll see the settings option at the top right. You select that, and here you'll see an option that says MRP in item. So whenever this is switched on, as you saw in the previous invoices, I'll show you again. There will be an MRP column in your invoice. So you see this MRP column shows up in the invoice, and then you can change this from items. Like let's say I want to set an MRP for this item. Uh, right. So I'll just go to edit, and I can change the MRP for this item. If you are unable to see MRP here, go to settings and just switch on MRP from here. So that way you can change the MRP in the item and then have it show up in the invoice. Okay. So Aradhana music classes. There's one more question from coaching center. So they say, what is the work for coaching center? What's the process? How is it working for students? So they basically want to know how can they use My BillBook app for their coaching class. Right, right. So it's great that you want to use My BillBook for your coaching classes. It's something that we've seen other business owners do as well. So I'll just quickly give you like a rundown of what I've seen them do. Um, One of the things that My BillBook becomes very handy whenever they're managing their businesses, they can just quickly see from whom I need to take fees and who has already paid me. Along with that, we've seen like we often have this culture, right? Ki we pay after 3 months or we pay after 6 months. So it becomes very easy for business owners to keep track. Ki acha, from this pupil I've received the tuition, but from this pupil I haven't yet received it. So it becomes very easy. You don't have to go to like a physical book. Let's say you're at home
and you don't have like the physical book with you because your phone is always with you, it becomes much easier to sort of keep track of your cash flow and what your outstanding is. um, Along with this, let's say you also want to give your pupils like a proper invoice. Like let's say you have a music class, right? So I've seen a lot of music classes have a per session basis payment. Like let's say if you take 10 sessions, then you have to pay for 10 sessions, and then the invoice would say 10 sessions. So what you can do is you can create whatever service you're providing. Like let's say you teach classical music for 1 hour, so that can be your item, and you can set the rate for it. And let's say a pupil takes like 5 sessions with you, so in your invoice, um, I'll just quickly show a dummy invoice. So in your invoice, uh, not this one, right? In your invoice here it will say classical music session for 1 hour. Quantity will say number of sessions. You won't have an MRP column, just switch it off. If you want to give any discount, you can add those, and you will have the total amount. So this way you can keep track of your outstanding. You can sort of have mobility. No need for you to always have the ledger book with you, and you can create professional looking invoices which will make your pupils feel like this is a professional organization, everything happens properly, they give me a proper invoice, and you can even share it over WhatsApp. Great. Sovic is using My BillBook app for inventory management. Okay. Mm-hmm. So he wants to import product data from Excel file. So he wants to know how can he do that. Right. So sir, I'll just quickly show you how you can import all of your items. So I'm in the more section of the app. You will see an option that says bulk upload items, right? So we have like a bunch of options from which you can choose how you want to upload your existing data. Now I can read, sir, that you want to import previous products from an Excel file. So we have an option for Excel here. Now there are two ways you can do this. Either you just directly upload the Excel file with us along with this information, the item name, the sales price, purchase price, or you can use the desktop app for this. The desktop app allows you to sort of download an Excel template, and in that Excel template we'll teach you how to add your items, and then you can upload that Excel template, and that is much faster. Like here to this process where you upload an Excel file from your phone may take some time, but let's say you use the desktop app for this, it happens instantly. Whenever you enter something that probably doesn't fit the field, like let's say you enter an alphabet in sales price, the desktop app will tell you that you have to make this correction. And essentially we've seen a lot of customers just upload like what they do is they have an Excel file already where let's say uh, they have an Excel file that they share with their supplier as to what items I want to buy, or let's say they get a PDF and then that convert that to an Excel. I've seen business owners add as many as like 100 200 SKUs in like 15 minutes, where they just make corrections to the Excel file, upload it, and all of their data is in My Bill Book. They can start billing right away. Sovic has one more question where he asks, he wants to know what he should do. He wants to resell BillBook app. Right, right. So that's great that you want to sell BillBook app. I'll just quickly show you uh, how you can sort of become a reseller. So right now we have this option in more that says become my BillBook reseller, and when you press this option, you'll be taken to a Google form that sort of takes your personal information, and it'll also tell you about what sort of incentive schemes will exist for you. Um, right now we don't have the incentive scheme here, but we'll definitely attach a link in the comments that explains the entire incentive scheme. Essentially, the more my bill book licenses you sell, the more you can earn, and we have all sorts of rewards for this. We've seen a lot of resellers who believe in the promise of my bill book, make some commission, make some extra money by getting other businesses to start using my bill book. शाकिर सरताज कहते हैं, सर मुझे प्लीज बताइए जीएसटी A5 पेज कैसे सेट करें कि जिसमें मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाल सकूं. ये कहते हैं कि अगर 3 प्रोडक्ट डाल देते हैं तो A5 में 2 पेज प्रिंट करने पड़ते हैं या A4 में लैंडस्केप में निकालना पड़ता है. राइट, राइट. तो मैं फट से दिखा देता हूँ हमारे सारे दर्शकों को कि जो शाकिर सर कह रहे हैं उसका मतलब वो क्या कह रहे हैं. अगर मैं इन्वॉइस सेटिंग्स में जाऊँ और मैं इन्वॉइस फॉर्मेट में जाऊँ और लेट्स से मैं कोई भी A5 थीम ले लूँ, तो A5 थीम्स में क्या होता है, क्योंकि काफ़ी कम जगह है ना, तो अगर आप लेट्स से 3 आइटम्स भी ऐड करते थे तो वो अगली लाइन में चले जाता है. तो करंटली ये दिक्कत हमने कुछ और बिजनेस ओनर से भी सुनी है कि वो जो भी A5 पे बिल बनाते हैं वो 2 पेजेस में चले जाता है. तो सर अभी के लिए तो आप यही कर सकते हैं कि आप इधर A4 पेज पे ले लीजिए,
या आप हमारे साथ रुकिए सर, हम गोइंग फॉरवर्ड एक पोर्ट्रेट A5 थीम के बारे में सोच रहे हैं। तो जैसे आपकी बिल बुक होती है राइट, तो बिल बुक का पेज पोर्ट्रेट होता है, आप सीधे सीधे लिखते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ पर भी एक बिल बना पाएंगे। तो ये तो ये A5 लैंडस्केप, वो A6 पोर्ट्रेट टाइप का पेज होगा। तो वो डेफिनेटली सर आपके काम का आएगा, जहाँ पे आप लेट्स से 5 या 6 आइटम्स डाल सकते हैं। तो सर डू स्टे विद अस, विल डेफिनेटली शिप समथिंग लाइक दैट soon. Silicon Pharma says, I want to go for premium membership. What will be future annual charges? Right. Sir, it's great that you want to buy the premium plan. The premium plan comes with multiple staff option, the option to remove all sorts of branding. So, sir, the premium plan costs 800 rupees for the year, and in that you get all the premium features that My BillBook app has. Avoid YT says, please, Bengali language add. Um, Definitely, sir. As I mentioned to the gentleman who wants Marathi language, we'll definitely be introducing more and more regional languages. Gujarati and Tamil are only the start. Going forward, we want every business owner in India to be able to do business just like he does today in My BillBook app in his regional language. Abule says, spot billing time previous balance not showing on thermal print. Right, sir. Sir, right now we haven't added a previous balance on thermal printer invoices. We'll definitely add that, sir, going forward. Silicon Pharma says, can we see a previous selling rate at the time of invoicing? Right, right. Sir, currently what we do is we have a set item price, and that item price will always show up whenever you're creating an invoice. Like let's say I make an invoice for the, okay. So the prices I'm seeing right now are the set item prices in the inventory. Um, let's say you want to change the price, so you just tap here, and yeah, if you tap on the price again, you will be able to edit the price. So this way you can always see the set price for the item that exists in the items tab, and whatever price you want to add now. As of this moment, we don't have an option to show the previous price that you may have given for this item, but going forward we'll definitely introduce something like that where you can sort of see at customer specific level what price you want to set. Like we've seen a lot of businesses who tell us ki they have an old customer, so they always sell to him at like a 10% discount, so they want the app to remember that price for them. So going forward we'll definitely introduce features like this. GB Tronic has a very interesting question. He says, how to merge customer? I create two invoices for two customers with two different credit, but firm is same for both party created by. Acha. So sir, that's a very interesting requirement. As of this moment, though, we don't have this option. Like you can see here, there are two customers with the name Deep. So one of the things that you can do is, let's say, you can just search for that customer's name, and you'll have to sort of manually add. Like here, so I can just tell because one of the outstanding is zero. But in that case, you'll have to sort of add what the outstanding is for each party. Um, we would actually love to understand like why you have this requirement and how we can help you solve it. So if you can reach out to our chat or our call support, we'll enjoy talking to you and understanding what exactly the requirement is and how we can solve it. Shaji Panchali says, sir, how to do inventory audit? Acha. So currently what we've seen a lot of business owners do is whenever they are doing their physical inventory audit, like let's say they like what they would do before My Bill Book is they would carry all of their invoices, and they would sort of try to tally how much inventory they expect to have. Like let's say they would go through the whole day sale. They'll mark like how many Kit Kats I've sold, and now they have a rough idea. कि ठीक है, I made 10 sales today. I sold 20 Kit Kats, so my inventory should now be let's say 65 minus 20, 45. But that's like a very manual process, right? You have to go through all of your invoices and do it for every item in your inventory. And we've seen customers, business owners who have as many as 100 SKUs. So with My Bill Book, you don't have to do any of that. Just show up at your inventory at your go down. Go to the items tab. The items tab will tell you how much inventory you should have. Now this inventory can get changed from two places. One, you make a sale or a purchase. You make a sale, your inventory drops. You make a purchase, your inventory increases. Let's say you're not recording purchases in My Bill Book, you can just quickly adjust it here. So every time you make a purchase, just press on this button.
press add stock and add whatever quantity you've purchased. With these two things, you should have a real time value of your inventory always in your my bill book app. तो आपको बस गोडाउन में जाना है और आपको फिजिकल काउंट करना है और वहाँ पे आपको चेक करना है कि माई बिल बुक ऐप मैच करता है क्या. दैट्स ऑल. आनंद कुलकर्णी कहते हैं, I added logo as PNG file, but whenever there's white or black background in logo, that automatically turns into black on invoice. अच्छा. Sir, definitely reach out to us on our call or chat support. This is a very rare case, and we definitely like to understand why this may have happened, and we'll try to fix it as soon as possible. Tanmay Tambak says, can we create a separate rate list for specific customers? Acha. So sir, currently we do have a rate list option. So let's say you go to statement or reports, and then you go to item reports. You will see a rate list report. But what this does is this essentially is a rate list of the prices that you set in your items tab. What I mean is the prices you've set here. So let's say you want to share like a customized rate list with a party. What you can do is you can sort of make the changes in the items right now. Like let's say I want to sell to Avinash, but let's say Avinash is an old customer. So I'll sell let's say I know Avinash will buy Britannia cakes from me. So I'm going to sell it at let's say like a 10% discount. So I'll just change the price here. I'll edit the price and I'll change it here. And I can then quickly go to the rate list and then I can share the rate list with him. As of this moment, we don't have like a customized rate list option. You'll have to make that change manually. But going forward, sir, definitely we'll try to introduce some sort of pricing that's specific to customers and then a complete rate list for that customer. Uh, Vipin Jadhav and Chanchal Kumar Bali, both of them have same almost the same question. Mm-hmm. Can this app work on two devices with same login? Right. Yes. Chanchal Kumar says, sir, दो PC तीन मोबाइल में करना है. अच्छा. um, सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के दो भाग हो जाते हैं. एक तो है कि कैन यू यूज़ माई बिल बुक ऑन टू फोन्स. क्या आप माई बिल बुक दो फ़ोन पे चला सकते हैं? जी हाँ, आप माई बिल बुक दो फ़ोन पे चला सकते हैं. लेट्स से आपको लेट्स से आपका फ़ोन गुम हो जाता है और आपको फिर अभी सेम डेटा एक्सेस करना है आपके नए फ़ोन पे, तो वो सब पॉसिबल है. आप बस नए फ़ोन से लॉगिन करिए. जो डेस्कटॉप का ऐप है उसे आप साइमल्टेनियसली दो कंप्यूटर से यूज़ नहीं कर सकते. मेरा इससे क्या मतलब है कि अगर मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और मैं अविनाश जी को क्रेडेंशियल्स देता हूँ, मेरा लॉगिन और ओटीपी दे देता हूँ, जब वो लॉगिन करेंगे तो मेरे कंप्यूटर से लॉगिन बंद हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा. तो जो डेस्कटॉप ऐप है उसमें आप साइमल्टेनियसली दो जगह से लॉगिन नहीं कर सकते. बट हाँ, अगर लेट्स से आप अलग अलग टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, वो इंटरनेट पे चल रहा है, तो इसलिए आप अलग अलग टाइम पे किसी भी कंप्यूटर से उसे यूज़ कर सकते हैं. फील म्यूजिक कहते हैं, सर यहाँ पर हम विदाउट जीएसटी पर काम कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि बाद में विदाउट जीएसटी का भी मुझे टैक्स पे करना पड़े? तो सर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका डेटा यहाँ पे है वो कम्प्लीटली सेफ है. लाइक आपका डेटा सिर्फ आप देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता. ना हम देख सकते हैं, ना मतलब इनकम टैक्स देख सकता है, ना गवर्नमेंट देख सकती है. तो अगर आप यहाँ पे नॉन जीएसटी का काम कर रहे हो तो और किसी को पता नहीं चल रहा, वो सिर्फ आपको पता है. तो ऐसे तो कभी नहीं होगा कि आपको इस पे जीएसटी पे करना पड़े. महेंद्र वेलानी कहते हैं, क्रेडिट इनवॉइस में स्पेसिफिक टाइम के बाद ऑटो इंटरेस्ट चार्ज कैसे कर सकते हैं? सर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सजेशन है. हमने भी कुछ बिजनेस ओनर से बात की जो बताते हैं कि वो टाइम के साथ क्रेडिट में इंटरेस्ट ऐड करते रहते हैं. कि लेट्स से मैंने किसी पार्टी को कोई सेल किया है और उन्होंने 3 महीने के लिए नहीं लौटाया कैश अमाउंट, तो लेट्स से उन पे 5% इंटरेस्ट लग गया. 6 महीने के बाद थोड़ा और इंटरेस्ट लग गया. तो दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर. और हम समझते हैं कि जो भारत के बिजनेस ओनर्स हैं उनको ये काम आएगा. करंटली सर हमारे पास ऐसा फीचर है नहीं, बट हम डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे और हम थोड़ी रिसर्च करेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. शिवेंद्र नाथ चतुर्वेदी says, how can I add multiple shipping site for one supplier? Right, right. So sir, this is another very interesting suggestion. To all of our other viewers, I'll quickly just explain what this means. Let's say I have a party that I sell to, but that party has a different shipping address. Like let's say that party has 4 godowns,
and so every time I might have to send to a different godown. Right now we don't have like a multiple shipping address option. आप अगर पार्टी बनाते हैं तो मैं बनाता हूँ दीप नाम से पार्टी, तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि वो पहले बिलिंग एड्रेस पूछता है। आप अगर शिपिंग एड्रेस का ऑप्शन खोलेंगे तो इट विल ओनली आस्क वन शिपिंग एड्रेस, नॉट मल्टीपल शिपिंग एड्रेसेस। So right now, though we don't have that option. I've spoken personally to some customers who just change the shipping address. They have it saved in their notes app, and whenever they want to send it to the same party but a different address, they just change the shipping address for that party and they make the invoice. Um, Going forward, we'll definitely introduce a feature wherein you will be able to like choose between multiple shipping addresses. वसीम चौधरी का दो सवाल। एक तो सर आईएमईआई नंबर से सर्च ऐड इन्वेंट्री सेल आइटम्स सब कुछ आईएमईआई से कर सकते हैं क्या? मतलब वो इन्वेंट्री सेल करना चाहते हैं, सर्च आइटम करना चाहते हैं, सब कुछ आईएमईआई से। और दूसरा, दो शॉप हैंडल कर सकते हैं क्या? अच्छा, तो सर करेंटली हमारे पास IMEI बेस्ड सर्च तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं जो मोबाइल शॉप के बिज़नेस में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ पे IMEI का एक एडिशनल आइटम कॉलम बना रखा है। तो आप एडिशनल आइटम कॉलम के अंदर जाइए और वहाँ पे आप IMEI के नाम से एडिशनल कॉलम बना लीजिए। एक बार आपके पास ऐसा कॉलम होना तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी आईफोन वाले आइटम में जाते हैं, राइट, आप किसी भी आइटम के अंदर वो एक IMEI वाली फील्ड ऐड कर सकते हैं, और जब भी आप इन्वॉइस बना रहे हैं तब आप वहाँ पे IMEI ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप IMEI से सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च तो नहीं कर पाओगे, बट अगर आप इन्वॉइस पे दिखाना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा सवाल है कि आप दो शॉप्स हैंडल कर सकते हैं क्या, तो सर जैसे मैंने पहले बताया कि जो मल्टी कंपनी फीचर है वो अभी माई बिल बुक ऐप में एक अकाउंट में नहीं है। बट लेट्स से आपके पास दो ही शॉप्स हैं तो आप ये कर सकते हैं कि काफ़ी फ़ोन्स में आजकल ड्यूअल सिम होते हैं, दो सिम होते हैं, और आपका जो माई बिल बुक अकाउंट है वो आपके फ़ोन नंबर से रजिस्टर्ड है। तो आप एक ही फ़ोन पे दो अलग अलग फ़ोन नंबर से दो अलग माई बिल बुक अकाउंट चला सकते हैं। तो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग सर जो आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अपने सारे व्यूअर्स से जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे फिर से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अगले हफ्ते फिर आएंगे लाइव, तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। इसके अलावा जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे, नई ट्यूटोरियल डालेंगे या नया अपडेट डालेंगे तो आप सबको पता लगता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने आखिरी सवाल लेने वाले हैं, इसके बाद हम अपने कॉन्टेस्ट विनर्स का नाम अनाउंस करेंगे। तो दीप जी, आखिरी सवाल है माँ चामुंडा ट्रेडर्स से। कहते हैं, व्हेन आई मेक इनवॉइस नंबर 2, after that I make two more bill, then invoice number 2 order gets cancelled. What to do? If I cancel invoice 2 directly, it all invoice number automatically changes. What? अच्छा, मैं एक बार फट से दिखाई देता हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक पुराना इनवॉइस नंबर जो है उसे उन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मैं 21 को डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास 22 है यहाँ पे, तो मैंने 21 को कर दिया डिलीट। ठीक है, अब आप देख रहे हो 22 को कुछ हुआ नहीं, 22 अभी भी वैसे ही है, और आपके जो सब्सिक्वेंट इन्वॉइसेज हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया। बट अब होता क्या है, 21 की गैप रह गई ना, तो आप 21 नंबर से एक इन्वॉइस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 21 पे सेट कर दिया, और लेट्स से मैंने की कोई आइटम्स ऐड ना किए, डायरेक्टली अमाउंट डाल दी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 21 नंबर से इन्वॉइस बन गई है। तो इसका क्या मतलब है, आप अगर कोई इन्वॉइस को डिलीट करते हैं, उसके जो सब्सिक्वेंट इन्वॉइसेस है, उसके जो बाद वाले इन्वॉइसेस उनमें कोई चेंज नहीं आता है, बट जो इन्वॉइस नंबर आपने डिलीट किया है वो नंबर फ्री हो जाता है, तो आप उस नंबर से अभी कोई भी और इन्वॉइस बना सकते हैं। So with that we've addressed all the questions. Now it's time to announce our last week contest winners. हमारे लास्ट वीक के कॉन्टेस्ट विनर्स हैं संजीव कुमार, हविका राज और छाया धमेचा। मैं एक बार फिर सबको बता दूं, हमारे लास्ट वीक कॉन्टेस्ट विनर्स हैं संजीव कुमार, भाविका राज और छाया धमेचा। हम आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस लाइव सेशन, एंड विल कम बैक अगेन नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। थैंक यू।